Good morning, my dear children. Welcome back. Do you remember? Yesterday we revised magic words, good manners, and good habits. Correct? So, आप सबने कल गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स एंड मैजिक वर्ड्स का रिवीजन किया था, है ना? अब आप सब वो फॉलो करोगे तो सब आपको गुड बॉय और गुड गर्ल बोलेंगे. करेक्ट? So do follow all the good manners and good habits. Okay, children, as you have learned good manners and good habits very well, tell me one thing. To help others is a good manner or bad manner? मतलब किसी को मदद करना अच्छी बात होती है कि बुरी बात होती है? अच्छी बात होती है ना? It is a good manner. So, I am going to narrate you one story related to it. Okay? Ready to hear the story? Come on, let's start. The ant and the dove. चींटी और कबूतर. Once upon a time, a very thirsty ant was drinking water from the river. Suddenly, the ant lost her balance and fell into the river. एक बार एक चींटी नदी के किनारे पानी पीने गई. अचानक से उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गई और डूबने लगी. हेल्प मी, समवन हेल्प मी, क्राइड द एंट. बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ऐसे करके चींटी चिल्लाने लगी. A dove sitting on a tree nearby saw that the ant was in trouble. A dove plucked off a leaf from the tree and dropped it into the river. एक कबूतर जो नज़दीक के पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था, उसने देखा कि चींटी मुसीबत में है और उसे उसकी मदद करनी चाहिए. उसने एक पेड़ का पत्ता लिया और तोड़कर पानी में फेंक दिया. The ant climbed on the leaf and thanked the dove for saving her life. चींटी फटाफट से उस पत्ते पर चढ़ गई और उसने कबूतर का धन्यवाद किया उसकी जान बचाने के लिए. After a few days, the dove was sitting on a tree. The ant saw the hunter aiming his gun at the dove. कुछ दिनों बाद जब कबूतर पेड़ पर बैठा हुआ था तो चींटी ने अचानक से देखा कि एक शिकारी अपनी बंदूक का निशाना कबूतर पर लगा रहा है. The ant knew that her friend's life is in danger. She quickly beat the hunter's leg, and hunter missed his aim and cried in pain. चींटी को पता चल गया था कि उसके दोस्त की जान खतरे में है. उसने जल्दी से जाकर शिकारी के पैर पर जोर से काटा. शिकारी का निशाना चूक गया और वो दर्द से चिल्लाने लगा. This time, ant saved the dove, and dove thanked the ant, and they became good friends forever. इस बार चींटी ने कबूतर की जान बचाई थी. कबूतर ने चींटी को धन्यवाद कहा और वो दोनों हमेशा के लिए बहुत अच्छे दोस्त बन गए. Moral of the story is we should always help each other. इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. So children, I hope you all liked the story and you have learned something from it. Yes, आप सबको स्टोरी पसंद आई और आपने क्या सीखा उसमें से? कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. ओके, सो जब भी किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो आप उसकी मदद ज़रूर करना, है ना? जब आप किसी की मदद करोगे तो जब आपको किसी की मदद की ज़रूरत होगी तो वो भी आपको मदद करेंगे, है ना? जैसे एंट एंड डव ने एक दूसरे की मदद की, है ना? ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ द वर्कशीट्स. इन द फर्स्ट वर्कशीट you had to circle the good habits. Waking up early, brushing teeth,
taking bath and exercising are good habits, so we will circle them. In other two pictures wherein a boy is spilling the food while eating and a boy is wearing dirty clothes are bad habits, so we will not circle them. Now let's see the next worksheet. In this worksheet you had to tick mark on good manners. In the first picture, a boy is taking care of his pet dog. It is a good manner, so we will put a tick mark. In the next picture, a boy is sharing his toy. Sharing is a good manner, so we will put a tick mark. In the next picture, two boys are greeting each other. Greeting is a good manner, so we will put a tick mark. In the next picture, a boy is helping an old lady. Helping others is a good manner, so we will put a tick mark. In the last picture, two boys are fighting. Fighting is a bad manner. It's not a good manner, so we will not put a tick mark. Children, I hope you all have completed your worksheets like this. Good job. Okay children, I hope you all had fun learning through my videos. Take care and keep following good manners and good habits. Bye-bye. Have a nice day. To inculcate good habits and good manners in your children, I request all the parents to take out some time every day for their children and narrate a nice story to them. Stories also helps children learn moral values. Thank you.